Hi guys, good evening everyone. Welcome to this session on accounts. तो ये आज हमारा आई बिलीव थर्ड सेशन है अकाउंट्स का एंड वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर 2 टुडे. इट टुक अस अ लॉन्गर टाइम टू कवर द फर्स्ट चैप्टर, जो कि मुझे लगता है नहीं होना चाहिए था. शुड हैव टेकन लेस टाइम. But anyways, do not worry, we'll try to speed it up and we'll try and cover second chapter today. Aj I'm not in Delhi, I'm out of the city, but that doesn't mean that teaching and studying has to stop. तो इसीलिए पढ़ाई को हम जारी रखेंगे, कंप्लीट करेंगे. And today we will try and understand some more concepts of chapter 2, which is basic accounting terms. Please give me a thumbs up and let me know if you can see me and hear me clearly. थोड़ा सा एक बार आप बता दीजिए सब कुछ सही है, so that we can start with the session. Wonderful. Sautik says clear. Nazneen says clear. Vaishali says yes. Sweetie is here, clear. Gaurav is here. Good evening. Good evening, guys. Good evening, everyone. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. कोई डाउट है अभी तक तो प्लीज़ यू कैन आस्क रिलेटेड टू वट एवर वी हैव स्टडीड. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन वंडरिंग जुलाई तक सिलेबस पूरा हो जाएगा या नहीं होगा. नहीं होगा तो हम एग्ज़ाम कैसे देंगे. Very honestly, although I cannot claim anything and it's very dangerous, but 99.99% chances are that the exam will not happen in July. It's just not possible. They are not so fast. ऐसा नहीं होता है कि पहले 2-3 साल गायब हो जाएं और फिर जब एग्ज़ाम लेके आए तो 2 महीने में ख़त्म कर दें. That is not possible. So what is going to happen is they're going to take their time. Somebody says थोड़ी सी नॉइस वॉल्यूम कम है. 1 second. अभी बेटर है क्या? इज़ इट बेटर नाउ? जस्ट लेट मी नो. वॉइस इज़ टू लो somebody says. शुभम was also saying. एक बार प्लीज़ बता दीजिए इज़ इट बेटर नाउ. I've changed the filter. Good evening, good evening. Just let me know if it is better now. Or let me open the same video. It's better. Noise nahi honi chahiye. That's the ultimate objective. When I speak, there should be no noise. Okay. Let me just remove all the filters and everything and see. Because filters nahi hote hain, to there is often a background noise. So I'm removing the filters now and let us see if it is better. I think it's almost the same. चलिए. If it's audible enough, you can hear me, then we can start. ठीक है. ओके, कुछ डाउट्स हैं तो उनको क्लियर कर लेते हैं. नंबर 1, somebody saying complete course will be on YouTube. नहीं, 1 महीने 1.5 महीने तक हम YouTube पे पढ़ाएंगे. उसके बाद भी
पढ़ाते रहेंगे, विल कीप टीचिंग ऑन यूट्यूब, बट पूरा कोर्स पॉसिबल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई हैव ऑलरेडी स्लैश द फीस इवन फर्दर. आपने देख लिया होगा, फीस काफ़ी कम कर दी गई है पहले से, विद द ऑब्जेक्टिव, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमसे नहीं हो पाएगा इतना, तो मुझे लगा कि कम कर देना चाहिए. ऑल्दो एफर्ट, आई नो कि हम लोग जितना एफर्ट लगा रहे हैं दैट इज़ मच मोर, बट देन वी थॉट दैट इफ़ द स्टूडेंट्स कैन नॉट अफोर्ड इट, तो फिर ऑब्जेक्टिव फुलफिल ही नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे. ओके, somebody is saying, Divyansh is saying, news in Sansad about यूपीएससी एग्ज़ाम. देखो वो रिकमेंडेशन है, ऐसी रिकमेंडेशंस बहुत आती रहती हैं जाती रहती हैं, इट टेक्स टाइम. तो यूपीएससी विल गो थ्रू इट, विल ट्राई एंड सी इफ़ इट मेक सेंस और नॉट. मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ. नंबर वन, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू प्रोसेस बहुत लंबा है. नंबर टू, जो सीट्स हैं वो ऑलरेडी बहुत कम है. यूपीएससी विल से सीट्स बढ़ा दीजिए, आप डबल कर दीजिए, हम 2 बार कर देंगे. आई थिंक दैट्स अ वैलिड आर्ग्यूमेंट. So it might backfire on the parliament or on the committee recommending it. तो इसीलिए मुझे लगता है, I don't think they will do much about it, or even if they do, it'll take some time. Okay. Shubham is asking when are we having weekly test for enrolled students. करेंगे भाई, अभी देखो अकाउंट्स का एक चैप्टर पूरा हुआ है, which is nothing to be very honest. हमारे 2 एक्ट्स पूरे हुए हैं, एक एक्ट और पूरा करेंगे एटलीस्ट, उसके बाद स्टार्ट करेंगे. एंड एनवायरनमेंट इकोलॉजी स्टार्टिंग टुमारो, उसके भी 3 से 4 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, देन वील स्टार्ट विद द टेस्ट्स. और करंट अफेयर्स हो गया है, तो करंट अफेयर्स का हम लोग जल्दी ही कुछ स्टार्ट करेंगे. ओके, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन स्टार्टिंग विद पॉलिटी क्लासेस. हिस्ट्री के सेशंस भी शुरू हो चुके हैं, तो आपके लिए बहुत सारे सेशंस एक एक करके शुरू हो रहे हैं. ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि जल्दबाजी में कुछ भी पढ़ा दो, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पढ़ाओ वो सही से पढ़ाओ. ओके, स्टार्ट करें. हाँ, स्टूडेंट्स आर अगेन एंड अगेन आस्किंग, उनको लग रहा है कि सारे सेशंस फ्री होंगे क्या. ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल फॉर मी. यू ऑल्सो नो द काइंड ऑफ एफर्ट एंड द काइंड ऑफ मनी इट टेक्स टू कैरी आउट ऑल दीज थिंग्स. जो मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ. हमारे यहाँ जो इंटरनेट यूज़ होता है उसकी कॉस्ट ही अबाउट 10,000 पर मंथ आती है. सो यू कैन इमेजिन 1,20,000 खाली इंटरनेट पे जा रहा है. So there is an effort required, there is a lot of transaction involved there as well. Okay, notes are not provided in Hindi, notes are only provided in English. So आपको हिंदी में अगर notes चाहिए तो you will have to probably look elsewhere. चलिए, let us start with the session, today's session, the chapter 2 today, which is about basic accounting terms. Now this is very very easy सकते हैं, and especially students who are not from commerce background, this holds a lot of importance for you especially. Okay, the first one that we have is called as, बहुत basic सी चीज़ है, एक बहुत basic accounting equation है जो आपने देखी होगी बहुत जगह पे. शायद आजकल lot of students are writing test also, तो वो टेस्ट में भी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ये equation, it might have come to your notice. The equation says assets is equal to liability plus capital. That is what the equation says. What does this mean? इसका मतलब क्या है? Assets is equal to liability plus capital. Now when we'll be going through the balance sheet, of course it will become very very easy and clear to you कि exactly assets is equal to liabilities plus capital कैसे हो जाता है बैलेंस शीट में, किस तरह से, how does it look. Somebody saying buffering हो रहा है. Well, I'm working on and thinking of starting a cheaper new course for international relations, labor laws, accounts, जो भी आपके subjects हैं जो UPSC में नहीं पढ़ते हैं. So we are thinking on working on carrying out or coming out with a specific course for those only. थोड़ा सा उसमें सोच विचार चल रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको करना किस तरह से है, right? Because a new course will have to be created, स्ट्रक्चर अलग होगा, बट चांसेस आर वेरी हाई कि उसको जल्दी से जल्दी हम निकाल पाएंगे. ओके, आई होप इट्स फाइन नाउ. जस्ट लेट मी नो इफ इट इज़ नॉट बफरिंग, आई विल मूव ऑन. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स है आपकी संपत्ति, वट एवर यू ओन, वट एवर यू हैव. ओके, वट एवर
is yours is an asset for you. जो आपका है वो आपका asset है. Let's say your father tomorrow gives you a bike for clearing the examination, या फिर एक कार आपको गिफ्ट में मिलती है अपने पेरेंट्स से एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए. तो आप क्या बोलोगे? व्हाट विल यू से? यू विल से कि आई एम सो लकी टू हैव रिसीव दिस फ्रॉम यू, ऑफ कोर्स, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ माई एसेट, आई ओन दिस. ओके, चाहे मुझे गिफ्ट में मिली हो चाहे कहीं से भी मिली हो, मेरे लिए एक एसेट है बिकॉज आई ओन दिस. सिमिलरली द कैश दैट यू हैव इन योर वॉलेट, आपको सैलरी मिलेगी, लेट्स से 60,000 रुपये सैलरी मिल रही, यू रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 60,000 and you know, you encashed all of it, now it's in your pocket, all that cash becomes your asset. Let's say your salary increases to 1 lakh and then you feel कि मुझे यार एक घर ले लेना चाहिए, I should buy some land or I should buy some house, some flat, anything related to real estate, and you end up buying it. तो जब आपने वो खरीद लिया तो क्या हो गया? आपका asset बन गया because you own it now, it's in your name. Let's say you purchase a new house and then you think that now I want to fix it up or now I want to move into it. So of course you would need some furniture. Sofa चाहिए होगा, table चाहिए होगी, chair चाहिए होगी. You will need all this furniture. When you buy all that furniture, that also becomes your asset because you've paid for it and you own it now, right? Now this is where it gets interesting. Loans given. नाउ बैंक के लिए उल्टा होता है, या फिर बैंक के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है समझना कि उसके लिए एसेट क्या होगा, लाइबिलिटी क्या होगी. जो भी बैंक ने लोन दिया है, वट एवर द लोन द बैंक हैज़ गिवन टू एनी वन, लेट्स से यू वांट टू बाय दैट लैंड एंड यू गो टू द बैंक एंड यू से ऑफ कोर्स आई कैन नॉट बाय इट फॉर फ्री और आई कैन नॉट बाय इट फॉर विथ जस्ट द सैलरी दैट आई हैव. इट कॉस्ट लेट्स से 1 crore and my salary is let's say 2 lakh per month, and out of that 1 lakh will go into EMI if I take a loan from a bank. तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. इफ़ यू वांट टू बाय दैट लैंड यू हैव टू टेक दैट लोन. सो यू गो टू द बैंक एंड यू से प्लीज़ लोन दे दीजिए मुझे, 1 करोड़ का लोन चाहिए मुझे, एंड आई विल गिव यू 1 lakh एवरी मंथ, इतना मैं आपको पे कर सकता हूँ. बैंक ने बोला ठीक है. बैंक ने आपको 1 CR एक बार में दे दिया, उसने लोन दे दिया आपको, है ना. And you commit that you will pay 1 lakh back every month. 1 लाख आप वापस दे दोगे हर महीने. Okay. Now this loan that has been given by the bank, it is an asset for the bank. Why is it an asset for the bank? Because it is supposed to receive it back. उसने आपको उधारी में दिया है, ग्रांट नहीं है. It is supposed to receive it back and it is going to receive it back unless you default. Okay. So it has given you some money for some time period with a promise from your side that you will give it back to that bank. So बैंक के लिए वो एक asset है, वो एक संपत्ति है, because the bank actually owns it. It has only given it to you. Okay. जैसे कि for example tomorrow your friend comes to your house and he says यार तेरा furniture बड़ा अच्छा है, I have a party tomorrow evening and I really like this lamp. Can you give it to me for a night? And you're like ठीक है ले जा यार, परसों वापस दे देना, please don't break it. And he takes it for the night and he brings it 2 days later. Now अगर उसने आपसे ले लिया, it doesn't mean that it stops being your asset. It is still your asset because you have loaned that furniture, that lamp to your friend. है वो अभी भी आपका, पे आप नहीं किया था. Okay. Similarly, the loans that have been given by the bank are assets for the bank. And the loans that are taken by the bank, or you can say the deposits in the banks, because whatever deposits you make to the bank, जो भी पैसा मैं जाके बैंक में डिपॉजिट करता हूँ ना, what is that? That is a loan that I'm giving to the bank. ऐसे समझने में आसानी होगी. It's in short a loan that you have given to the bank. That's why the bank is giving you some interest. Otherwise bank पागल थोड़ी है that will give you some interest on whatever you deposit, because it's actually a loan that you're giving to the bank. The bank is giving you interest. So ulta, opposite of loans given would be loans taken. So whatever loans the bank takes becomes a liability of the bank. Why liability? Because it has to give it back to you. आपको वापस देना है ना उसको. That's why it's a liability for the bank. The investments that you've made. Now investment यहाँ पे we are specifically talking about financial investments. So whenever you make financial investments, मैंने आज डिसाइड किया कि मैं एक SIP बनाऊंगा
और उस SIP में आई विल पुट 10,000 पर मंथ, हर महीने में 10,000 डालूंगा। अब अगर 10,000 हर महीने डाल भी रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं है इट विल स्टॉप बीइंग माई मनी, इट विल स्टिल बी माई मनी. It might reduce, it might increase depending upon the interest that I'm getting or the returns that I'm getting, but it will be my money forever, right? Because I have invested it, it was my earnings, and I've decided to invest it in certain financial transactions. तो जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में करता हूँ या कोई भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, दैट रिमेन्स माई एसेट्स. एंड द लास्ट वन इज डेटर्स. यहाँ पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि डेटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है. देखो मेरे लिए जो डेटर होगा, इफ़ अगर तुम मेरे लिए डेटर हो, पहले ये समझ लेते हैं, देन वील अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु डोंट नो. इफ़ यू आर माई डेटर देन आई एम योर क्रेडिटर. Please understand this because these are two opposite terms, terms opposite to each other. This is me, and let's say blue mein this is you, right? Now let's say that you are my debtor, you are my debtor, then automatically I become your creditor. If you are my creditor then automatically I become your debtor. अभी तो आई थिंक बफरिंग नहीं हो रहा है, जस्ट लेट मी नो इफ इट इज स्टिल बफरिंग. आई डोंट थिंक इट्स बफरिंग एनी मोर. If you are my debtor then I am your creditor. Now who is a debtor? Debtor is a person who owes you, जिसने लोन लिया है. Whoever has taken, let's say tomorrow I go and take some loan from the bank. मैंने डिसाइड किया कि मैं लोन लेता हूँ बैंक से, ओके. तो बैंक के लिए, फॉर द बैंक आई एम अ डेटर बिकॉज आई ओ मनी टू द बैंक. सो whoever has taken the loan becomes the debtor. Whoever has taken loan becomes the debtor. तो D is equal to T, okay. And whoever has given the loan becomes the creditor. C is equal to G. This way you can remember it in case it becomes a problem in the examination. यहाँ से आप याद रख सकते हो, okay. C is equal to G. Creditor is a person who has given the loan, given money, and debtor is a person who has taken the money. So if tomorrow you want to take some money from, let's say, your friend on loan or your father for further studies or anything else, then you will be a debtor. Whoever takes the loan becomes the debtor, and your father will be the creditor because he has given the loan, okay. Now debtors are assets. For your father you are an asset. Why? Because you have taken the loan and you are required to pay it back to him, okay. Let's say you ask your father कि 20 लाख का लोन दे दो, मुझे MBA करना है, and your father says okay fine. Now you have to return this money now. You cannot just keep it forever. You have to return this money to your father tomorrow also once your MBA is done and you start earning. So that is why it is an asset for your father. You or the money that is given to you is an asset for your father. That is why debtors are an asset. On the other hand, creditors are a liability. Why are creditors a liability? Because अब ये debtor मैं डाल रहा हूँ because I am looking from the perspective of the bank, because the bank has given loan. So from the perspective of the bank who has given the loan, debtor is what? An asset. But from the perspective of the person who has taken the loan, जिसने लोन लिया है वो अपनी बुक्स में डेटर्स थोड़ी डालेगा बिकॉज ही इज़ द डेटर. वो खुद ही डेटर है, उसने खुद ही लोन लिया है. ही हैज़ टेकन द लोन फ्रॉम समवन हु इज कॉल्ड एज अ क्रेडिटर. जैसे योर फादर, यू टुक द मनी फ्रॉम योर फादर फॉर एन MBA. तो योर फादर बिकम्स योर क्रेडिटर बिकॉज योर फादर इज टू बी गिवन दैट मनी बैक आफ्टर 2 years, 3 years, 5 years, वट एवर द एग्रीमेंट इज. तो 5 साल बाद क्योंकि पैसा वापस देना है, that is why he is a creditor for you, and that is why he is a liability because you have to pay him back. Creditor is what who gives money, debtor is what who takes money, okay. I hope this is clear. ये भी clear है, ये सारे assets वाले clear हो गए हैं, कोई doubt है तो पूछ लीजिए. The last one in liability is outstanding expenses. Now this is not an exhaustive list that I'm giving you. We have to understand it and learn it slowly and steadily. It'll take some time, okay. So what are outstanding expenses? The last one here in liability, these are the most important ones. Outstanding expenses are expenses that you had to pay but you have not paid yet. The best example here is electricity bill. आपका electricity using ACs
It's so hot in the northern part of the country. In fact, the entire country said you have to start using ACs. Now, what is that? Outstanding expense that you have to pay. इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 5,000 रुपये का, आपकी हवा निकल गई, आपने बोला है नेक्स्ट महीने दे दूंगा, काटते तो 2 महीने बाद हैं बिजली, नेक्स्ट महीने एक साथ दे दूंगा, आई विल यूज़ लेस फॉर कैश, यू टेक इट ऑन क्रेडिट कार्ड. ओके, तो जब क्रेडिट कार्ड पे ये रेबैन लोगे तो क्या होगा? यू ऑलरेडी स्पेंट दिस मनी, खर्चा तो कर दिया ना, यू ऑलरेडी स्पेंट दिस मनी, बट फॉर दिस एक्सपेंस यू हैव नॉट येट पेड. पे आप कब करोगे? 1 महीने बाद, आफ्टर अ मंथ. सो फॉर दिस 1 month, is it fine now or is it still buffering? Okay, I think it's fine now. Okay, yes, at my end also it's buffering, so I'll do one thing. I don't think even I'll be fine teaching like this. I'll close the session and I'll record it. Wi-Fi लगा हुआ है यार, but I don't know what's the problem. It was happening in the afternoon also. Probably the speed is less here. So I'll record the session and I'll upload it for you guys. Probably by tomorrow morning or tomorrow evening, you should find it. कल मॉर्निंग में, do not forget, there is a session by Tanu ma'am at 11 a.m. that is from the studio itself. तो इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, you don't have to worry about it from there. तो कल सुबह please be there for the class at 11 a.m. and 12 p.m. onwards there is another live for the book that I have written for UPSC. So please be there for that as well if you're interested in understanding about the book and interested in buying that book. It's very cheap, just 85 rupees. If at all you're thinking about UPSC prep, I don't think spending 85 is going to be a big task for you. So you can do that as well. Okay. So I'll see you tomorrow at 12 and please be there at 11 for the live class of environment and ecology. I'll record this session and give it to you because there seems to be a lot of buffering.